and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today we are going to do a material balance on extraction column, but before that we are going to understand some key features of extraction column. Or if you want to watch the whole playlist of the process calculation subject, the link is given in the description box and in the I button. So you should go and watch it once. Okay, so till now if you have not subscribed to my channel, subscribe it, otherwise you will not get any type of notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numerical short notes and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So without further ado, let's get started with the lecture. So student, if we talk about the extraction column, it is the method of separation of solute constituent present in the solid or liquid by using any solvent. So what happened in the previous unit operation, that we separate this solute from the liquid or gaseous feed with the help of any solvent. Okay, but in the case of extraction, the feed may be solid or liquid or mixture of solid or liquid, and we separate it with the help of any solvent. Okay, so basically if you see the diagram of the extraction column, or this is the diagram of the packed bag extraction column, you can see that we have two inlet and two outlets. Okay, the first inlet is the feed solution solute light liquid inlet. Okay, and the second input is the solvent heavy liquid input. So what happened, we transferred the solute solution, which is the light liquid is transferred to the solvent liquid, which is heavy liquid, and it transfer with into the which yield the raffinate phase and in the extract phase. So what is the raffinate phase and the extract phase? So basically if we talk about the raffinate phase, it is a solvent rich phase in which the heavy liquid is present. Okay, and in the case of extract phase, the solvent rich with a light liquid basically. Okay, the solvent rich with a light liquid. So this is the difference between the extract phase and the raffinate phase. Extract phase, because it is a heavy liquid, it come out from the bottom, and the light liquid is come out from the top of the extraction column. Okay, so this is the procedure, and this is the mechanism how the extraction is works. Basically we transfer the light solute to the heavy solvent and yield a extraction phase and the raffinate phase. So another example, if we talk about the another example of the extraction pore, like the extraction of the oil from the oil seed, any seeds. Okay, and the second one is leaching of the ores, useful ores. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑयल सीड एक्सट्रैक्टर का. ठीक है, दिस इज द ऑयल सीड एक्सट्रैक्टर. We have a 2 input and 2 output. Okay, so we inserted oil seed from here and we inserted the solvent. So basically oil seed contains some amount of cake and oils, and the solvent which basically remove the oil. Here the oil is the solute, and remove or carry the oil from here and separate the cake from the here. Okay, so basically what happened, the oil seed is reacted with keep in contact with the solvent, and then we finally get the raffinate phase. The raffinate phase, that is solvent plus oil, and the cake is the extract phase. Okay, so if we do the material balance on this process, so what will be the material balance, and किस के ऊपर हम मटेरियल बैलेंस लगाएंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई द मटेरियल बैलेंस ऑन द होल oil seed extractor. Then we apply a material balance on any constituent. Suppose we have a constituent or a solute present in the oil seed. Okay, so we have to do a material balance on it. Okay, the next material balance should be on the solid. Okay, on with the solid, that is cake. We apply the material balance on the cake, or you can say that it is a meal.
Okay, another material balance, that is the last one, which is the apply on the oil. Okay, so simply we apply the material balance, the input is equal to output. Okay, so because this material balance is without chemical reaction or it is carried out in the unit operations, so we apply simply material balance, overall material balance, that is input is equal to output. So if we apply the material balance, overall material balance, what was that? That the input, the feed input plus solvent is equal to extract and raffinate. यहाँ पे हमारा ये extract है और ये जो part है वो हमारा raffinate है. ठीक है, raffinate. Okay, so feed solution plus solvent is equal to extract phase plus raffinate phase. Okay, this is our overall material balance. Okay, now if A is a solute to extract, suppose we consider the A as a solute which we have to extract, so we apply the material balance on the A constituent, that is solute, that so finally the material balance on A constituent is A solute is A in the feed solution is equal to A in the extract phase or A in the raffinate phase. Okay, so we applied the material balance on the A solute, then the result will be A in the feed solution, is equal to A in the extract phase and A in the raffinate phase. Now we apply the material balance on the solvent, on the solid. Now we apply the material balance on the solid. So you can see that we inserted solid from here and the output of the solid is come out from the extract phase. So simply if we assume that there is no solvent solid present in the solvent section, so it will be, the material balance will be solid in the feed, so feed is equal to solid in the meal. Okay, solid in the feed is equal to solid in the meal. Now lastly we apply the material balance on oil, that will be oil in the seed. Oil in the seed is the input and we get output from the hair and some amount from the meal section. Okay, so simply the oil in the seed is equal to oil in the meal plus oil in the solvent. So this is all about, so that is the all about the material balance on the extraction column, and we basically derive or we solve the material balance for the oil seed extractor. So this extraction column is very simple. The question which come in the exam, if in the GATE or any competitive exam, it will be a very simple. We simply apply a material balance or we easily solve it very conveniently. Okay, so now come to the numerical part. We will going to discuss or we will going to solve two numericals. So first one is, so student, question is, the soya bean seed oil is extracted with the hexane. Okay, soya bean seed has to be extracted with the help of hexane in the batch extractor. We separate the soya bean seed with the help of hexane in the batch seed extractor containing 18.2% oil. ये क्या कर रहा है? 18.2% oil, solid 16.5% and moisture 12.3. Okay, 12.3 moistures. At the end of the process, the cake is separated from the hexane oil mixture. The cake is analyzed. The cake combination is that the oil, it contain oil 0.8%, solid 88.2%, moisture 11.0%. Okay, so we have to find the percentage recovery of oil, and all percentage are in the weight fraction. Okay, so the question is that we have to calculate the first thing is that we have to calculate the percentage recovery of the oil. Okay, so this is all given conditions, given data of the extract phase and the raffinate phase and in the feeds phases. So we are going to take a basis, that is the
flax seed we have 100 kg. Okay, so you can see that the concept behind solving any numerical is that first we understand, we have to see the what thing is to be calculated. So we have to calculate percentage recovery of the oil. So how we calculate any recovery of the things, that the recovery is calculated by using the thing which get upon the thing which inserted into 100. So finally, if we talk about the percentage recovery of the oil, so we have to calculate first the oil recovered, the oil recovered from the extractor, or the amount of the oil in the seed we inserted. Okay, we inserted or we fed the amount of the oil in the seeds, okay, into 100. So we have to calculate these two terms. Okay, so first we don't know the oil recovered, यहाँ पे कितना oil recovered हुआ है हमें पता नहीं है. तो सबसे पहले हमें मटेरियल बैलेंस करना पड़ेगा ऑयल के ऊपर, और वहाँ से पता करना पड़ेगा कि हमारा ऑयल रिकवर्ड कितना हुआ. तो उससे पहले हमें सॉलिड सीड में ऑयल, सीड्स में जो यहाँ पे ऑयल कितना प्रेजेंट है और यहाँ कितना ऑयल मिला, उसको डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे, तो परसेंटेज रिकवरी निकल जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, व्हाट वी हैव टू एज्यूम दैट दी लेट एक्स बी द क्वांटिटी ऑफ द केक ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सट्रैक्टर. ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया कि यहाँ पे जो केक सेक्शन पे x जो है इसका क्वांटिटी है, x जो है हमारा केजी, केक जो है रिमूव हो रहा है यहाँ से. ठीक है, x केजी रिमूव हो रहा है. अब जो है हम मटेरियल बैलेंस करते हैं. नाउ वी अप्लाई द मटेरियल बैलेंस ऑन दी सॉलिड्स. सो व्हाट विल बी दैट, द सॉलिड इन दी सीड, जो सॉलिड कितना सीड में प्रेजेंट है इज इक्वल टू सॉलिड इन दी केक. ठीक है, यहीं पर यानी कि एक्सट्रैक्ट फेज में ओनली केक अवेलेबल है, रैफिनेट फेज में तो प्रेजेंट नहीं है. तो हम यहाँ पे दो चीज़ों के पे मटेरियल बैलेंस करेंगे. तो सिंपली मटेरियल बैलेंस किया तो 100 इंटू सॉलिड, यहाँ पे जो फीड में कितना परसेंटेज है 69.5%, और ये वेट परसेंट सारे दे रखे हैं. तो सिंपली हम डिवाइड कर देंगे 0.69 से, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये 0.695 आ जाएगा. और वी मल्टीप्लाई द टोटल क्वांटिटी विथ द फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड. ओके, सो यहाँ पे देख लिया 100 इंटू 0.69 इज इक्वल टू, केक में हमने एज्यूम किया कि ये x क्वांटिटी है, x केजी क्वांटिटी है, और फ्रैक्शन केक में ऑयल सॉलिड का कितना दे रखा है 88.2. ठीक है, 88.2. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे जो क्वांटिटी ऑफ द केक है x, वो हमारा कैलकुलेट होके आया 78.79 kg. ओके, अब जो है हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे हमें केक की क्वांटिटी मिल गई. ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ऑयल इन अ सीड. ऑयल इन अ सीड कितनी होगी. ठीक है, तो ऑयल इन अ सीड निकालने के लिए इन द केक सेक्शन, के लाइट हैज़ गॉन, सो ऑयल इन द सीड कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली जो जितनी क्वांटिटी है केक की उसको इंटू करेंगे 0.08 से. ठीक है, तो वहाँ से हमें यहाँ पे जो ऑयल इन अ केक जो हमारा आ गया 0.63 kg. ओके, तो ये हमारा ऑयल इन अ केक मिल गया. अब हमें निकालना क्या है, अब हम मटेरियल बैलेंस करेंगे ऑयल के ऊपर, तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि इस पोर्शन पे ऑयल कितना रिकवर्ड हो रहा है. ठीक है, तो ऑयल इन अ सीड इज इक्वल टू ऑयल रिकवर्ड प्लस ऑयल इन अ केक. ठीक है, ऑयल इन अ केक मिल गया, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 100 इंटू 0.182 यहाँ पे, क्योंकि ऑयल का परसेंटेज कितना दे रखा है 18.2 इज इक्वल टू ऑयल रिकवर्ड. यहाँ पे हमें कोई फ्रैक्शन कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ऑयल इन अ केक हमने यहाँ पे निकाला. ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑयल रिकवर्ड मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ से हमें ऑयल रिकवर्ड मिल गया और वो हो गया हमारा 17.57 kg. ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज रिकवरी बाय सिंपली डिवाइडिंग द ऑयल रिकवर्ड और ऑयल इन अ सीड. और ठीक है, ऑयल इन अ सीड यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 18.2 प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो हमारा जो ऑयल रिकवर्ड आया वो कितना आया 17.5 kg. तो अगर हम इसको वेट फ्रैक्शन गिवन है तो उसको चेंज करेंगे और उसको फ्लो रेट से
टोटल क्वांटिटी से डिवाइड इनटू करेंगे तो 18.2 ही बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आया हमारा टोटल रिकवरी कितनी आई 96.54। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको बार बार ये टेक्निक बता रही हूँ कि सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो जो पैरामीटर यहाँ पे निकलेंगे उससे रिलेटेड पहले प्रीवियस स्टेप में हम सारे डाटा निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पायराडीन कंटेन 27% पायराडीन एंड 73% वाटर। ओके, 73% वाटर कंटेन कर रहा है, ठीक है। हमारे पास जो बैच एक्सट्रैक्टर है वो हम क्या कर रहे हैं, पायराडीन सॉल्यूशन को सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन की हेल्प से सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे 27% पायराडीन है तो वाटर कितने परसेंट हुआ, 73%, ठीक है। Extracted with the help of the chlorobenzene, the feed solvent are mixed well in the batch extractor and the mixture is the allowed to stand for the phase separation. So we have to कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ द टू फेसेस। यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हैं उनके टू फेसेस की क्वांटिटीज़ बताने हैं और सारे डाटा आपको गिवन है। ताकि एक्सट्रैक्शन फेस में 11% पायराडीन है, 84% क्लोरोबेंजीन है, 1% वाटर है, और रेफिनेट फेस में 6% पायराडीन है और 94% वाटर है। सो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट द क्वांटिटीज ऑफ द एक्सट्रैक्ट फेस एंड रेफिनेट फेस, एंड सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट द वेट रेशियो ऑफ द सॉल्वेंट टू फीड बेस्ड ऑन द 100 kg ऑफ द फीड। तो बाद में हमें क्या निकालना है, सॉल्वेंट टू फीड रेशियो निकालना है कि कितना हमें सॉल्वेंट डालना है विथ रिस्पेक्ट टू फीड। तो ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चंस में देखिए, अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें सबसे पहले, तो वेट रेशियो सॉल्वेंट टू फीड पूछा है, ठीक है। तो और बता रखा है कि 100 kg फीड है, तो हमें जितना क्वांटिटी सॉल्वेंट का रिक्वायर्ड होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। हम बेसिस क्या ले रहे हैं, 100 kg ऑफ फीड ले रहे हैं, तो 100 kg ऑफ फीड हम उससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, एक्सट्रैक्ट फेस और रेफिनेट फेस बताना है। तो एक्सट्रैक्ट फेस में रेफिनेट फेस कैसे निकलेगा, सिंपली हम मटेरियल बैलेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल मटेरियल बैलेंस अप्लाई करने से पहले ये देख लेते हैं, हम लोग ज्यूम लेट कर लेते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट फेस में जो क्वांटिटी है वो x हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो रेफिनेट फेस में है वो y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जितनी क्वांटिटी हमें सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड है वो हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम मटेरियल बैलेंस, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालें तो क्या होगा, फीड प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू रेफिनेट प्लस एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो फीड हमारा कितना 100 प्लस z इज इक्वल टू x प्लस y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब पायराडीन के ऊपर हम अगर हम मटेरियल बैलेंस लगाते हैं तो कहाँ कहाँ मिल रहा है, हमें मिल रहा है फीड में, रेफिनेट में और एक्सट्रैक्ट फेस में। तो सिंपली उसके मोल रेशियो से, वेट फ्रैक्शन से हम उसको जो हम इक्वेशन जैसे लिखते हैं वहाँ से हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x और y यानी रेफिनेट फेस और एक्सट्रैक्ट फेस दोनों ही अननोन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो वेरिएबल्स पैरामीटर हमारे पास आ गए। तो इक्वेशन नंबर 2 इस टाइप की हो जाएगी, 0.11 प्लस x प्लस 0.6y इज इक्वल टू 27। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसी तरीके से मटेरियल बैलेंस हम वाटर पे लगाएंगे। तो वाटर पे लगाने के बाद जो हमारी सेकेंड इक्वेशन आएगी फिर से x और y के टर्म्स में आएगी, वो इक्वेशन ये होगी 0.01x प्लस 0.94y इज इक्वल टू 73। तो बाय सॉल्विंग 1 and 2 and 3 इक्वेशन वी सिंपली गेट द वैल्यू ऑफ x and y, that is the quantity of refinate phase and the quantity of extract phase, that is x is equal to, if we talk about the extract phase, quantity of extract phase that is 204.28 kg, and for the quantity of refinate phase that is y is equal to 204.28 kg, ठीक है। We simply substitute these value x and y into a one equation, and then what will we get from the equation 1, that is the value of z, that is the quantity of the solvent required. So we simply put down all the values of x and y, and we get the value of z from here, that is 179.76 kg, ठीक है।
अब हमें सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हमने बताया वेट रेशियो निकालना है सॉल्वेंट टू फीड, और फीड हमें कितना दे रखा है 100 kg, तो सॉल्वेंट हमारा कितना आया 179.76 kg, तो सिंपली हम उससे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो रेशियो आएगा वो होगा 1.797। ठीक है, तो ये देखिए कितना सिंपल था, सिर्फ मटेरियल बैलेंस करना है विदाउट केमिकल रिएक्शंस और जो सॉल्यूशन हमें सिंपली मिल जाएगा। बस थोड़ा ये देखना है हमें कैलकुलेट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे के स्टेप करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।